Yeah, hello and welcome everyone. I hope you're live. Yeah, so a very welcome to the session fifth, I guess, of this goated DSA guide. And we are today with our topic two pointers. And what we'll be learning inside two pointers are this valid palindrome problem and the two sum two problem that will use two pointers, of course. So these are our point of interest today. So I guess we'll wait for 2-3 minutes and then we'll be starting, okay? Yeah. Is there any background voice that is coming? If that's too noisy, then please inform me in the chat. Okay. So we have used this two-pointer approach in one of our discussions that we had when we were discussing time complexity, if you guys remember. We had discussed how we are using two pointers to merge two sorted arrays, okay? So if you want to see it, you can see it there in our session one lecture that we had on time complexity. We had that in very great detail, so you can watch it. Okay. Okay. So let's get started. It's already time. Yeah. So first of all, starting with the topic of the day, two pointers. What are these two pointers and how are we going to use it? As the name suggests, two pointers. So of course it's telling us something about two points, right? Now, what are these points? These points are nothing but it's an it's a representation that we will use to mark particular positions in an array or a vector or any other data structure that stores serial or sequential data. Okay, so considering an array, say this is an array, we are having 2 points that are marking those indexes, right? Those indexes. So you can name anything. The points you can name anyway. So let's name it I and J. This is a general convention. People also name it left and right. So yeah, considering I and J, say we are fixing one point here, I, and we have to fix one point here, J. So what I will do is I will assign I is equals to the index position, index value of this array. So that is 0, right? And J is equals to 1. So this is one example of how we can use two pointers. Say if we had to do something like we had to assign in an array the first point as I and the second point as J. So for this we would not the second but the last point as J. Okay. So for this what we would do is I will start I with 0, well and good, but J I will start with arr dot size minus 1. Okay. Why minus 1? Because arr dot size ends here and we need something that's inside the array. So minus 1. So these are peculiar examples of how we will be using two pointers. Basically these two. If say I and J both were coincidingly here, so we would assign both with 0, right? That's as simple as it is. Okay. Now moving on. Why do we need two pointers? So now the question arises, why? There are many other methods, but why two pointers? Okay, so we saw one problem that was the two sum problem, a very common and hashtag problem number one on the lead code, two sum problem that we used
that we solved using hash map, right? If you guys remember, we solved it using hash maps. So what these hash maps did was we were making a map of integer comma integer, or rather key value pairs, say MP. But what we were doing is we were assigning those elements, right? Those elements here. So this had a space complexity, right? Of course, map was there, so it will take some space, right? So what was the space complexity here? It was order of n, right? जितना number होगा उतना space हम लोग maps पे डाल रहे थे. This is where two pointers helps us कि अगर map कर रहे हैं, rather सिर्फ इसको करो, space complexity order of n का रहता है. बट अगर हम लोग टू पॉइंटर का बात करते हैं, इफ वी डू द सेम थिंग यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच, बट यहाँ पे कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन दिखाएंगे. देर इज अ क्वेश्चन नेम्ड 2.2 सम 2, ओके, and here we will be using the two pointer approach, and what it will do is, what we are doing here, we are using the same array. We are not creating any other array to justify our solution, right? So we are using the same array, and hence our space complexity gets reduced, right? Because we are using no extra spaces. No extra space are required. Cool. So we are reducing space complexity. Then we will come to see there are certain examples where using two pointers we are converting time complexity is like O of n square or O of n log n to order of n, which is of course better, of course, right? Again, time complexity is the referral. If you haven't seen it yet, you can go and watch that video. And we have discussed it in great detail, so you don't have to worry about it. You can just go and see it. Okay. So this is it, right? These are the few reasons why we will be using two pointers. How we will be using, I told you, we are just simply defining this and doing nothing else, right? हम लोग को बस ये चीजें डिफाइन करनी है, ऐसा कुछ लिखना है और उसके अलावा कुछ नहीं काम है. Now coming up to the deal. Let's let's quickly move on to the questions first, okay? उसके थ्रू ही सीखते हैं अपन. So हमारा जो पहला क्वेश्चन है, that is valid palindrome. So for those of you who don't know what a palindrome is a, sorry, is a sequence that which when read from the start, or if when read from the end, will mean the same. For example, if I tell you ma'am, okay, ma'am. So if you start reading from the first position or the last position and go this way or this way, it will spell ma'am only, right? So this is a palindrome. Okay, this is what a palindrome is, quite simple. Now let's move on to the question of valid palindrome. What it says is, we'll of course copy it as we used to do it. Yeah. Okay, focusing on the question, let's see what it says. A phrase is a palindrome if, after converting all uppercase into lowercase, the first condition they mentioned is we need to convert all uppercase to lowercase. Okay. Although that's not a condition of a palindrome, the condition I told you, the if palindrome is spell it. Um, One second. What a palindrome is, spell it. Spell forward or backward. It's same. Okay. That is the condition of palindrome. But here we have some extra conditions, and those are
all uppercase letters transformed into lowercase letters, and removing all alphanumeric characters. So non-alpha, sorry, there should be no non-alphanumeric characters. Okay. And if the given string is a palindrome, then you return true or else you return false. In this case, this was the string. Okay. A man, a plan, a canal, and a Panama. So if you start from here or you start from here, you'll see that you are spelling the same things. Okay. Except, except two facts that here is a capital A, here is a small a that works here. The spaces, the commas, and anything that is non-alphanumeric. That is, it's neither an alphabet, that is A to Z or A to Z, small a to Z, or digits, that's 0 to 9. So ये बोल रहा है कि ये सारों को हटा के मतलब ये रह सकते हैं, बट ये जो सारे ये नहीं है, लाइक कॉमास एंड अदर सिंबल्स, उनको हटा करके we need to consider every other digits. Fine, well and good. We understood the problem. Now we will be looking at the approaches. So देखो इसका दो अप्रोच है basically. The first one is either let's first discuss something very important here, and these are called ASCII values. ASCII. What ASCII is? ASCII is American Standard Code for Information Interchange. I guess I have written it correctly. American Standard Code for Information Interchange. That's ASCII. What ASCII does is it provides you a number, a number which is then converted into binary in machines, which denotes each and every letters or symbols that is present in your keyboard. Okay, so it provides you the numbers. Now the ASCII values of a small a is 97, of small z is, rather let me write it this, small z is 122. Okay, ASCII value of capital A is 65, of capital Z is 90, and of 0 is 45, I guess. 0 is 48. Okay, 48 and 9 is 45 plus 56. Okay, that is it. Sorry, 57. 48 plus 9. So you can see one thing. How do you need to remember? How will you remember this is 65 plus 32 will give you 97. Okay, there is a gap of 32. Okay, where 26 तो ये खुद ही ले लेता है अंदर का, और the rest of the six symbols are there जो कि 90 to 96 के बीच exist करते हैं. Okay, and we have small a from 97 and small z. तो अभी क्या है कि हम लोग को है कि ये सारा नहीं होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. So what we can do is inside a loop से for I is equals to 0 से ये जो भी string है उसके size तक, so str डॉट साइज प्लस प्लस वगैरह वगैरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब जब हमारा आई इन सब के बाहर रहेगा ना, इन सारा पोर्शंस के बाहर, मतलब इफ यू वांट टू फॉर्मुलेट इट तो इसको ऐसा कुछ लिखना होगा कि आई हमारा लेस देन, सॉरी, एस ऑफ आई जब हमारा लेस देन 48 रहे तब हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 48 से नीचे हमारा कोई नहीं आ रहा. ठीक है, या तो हमारा जो एस ऑफ आई है उसको एस डिनोट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सी डिनोट करते चले कैरेक्टर के लिए, वो क्या हो, 48 टू 57 का रेंज हमको कंसिडर नहीं करना है, 57 से ऊंचा होना चाहिए, तब हम उसको इग्नोर करेंगे. ठीक है, बीच का रहेगा तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, नॉन अल्फा न्यूमेरिक है. तो सी अगर हमारा 57 से बड़ा हो एंड हमारा ये 65 से छोटा हो, लेस देन 65, और
अभी देखो ये यहाँ का डिस्टेंस कवर हो गया। अभी 65 to 90 ये खुद ही ले रहा है, बट हमारा 90 और 97 का एक केस बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि राइट सी इज ग्रेटर देन 90 एंड, रुको, हाँ, तो अभी 90 का तो ले लिया। अभी 90 से 97 के बीच रहेगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे, राइट, सो लेस देन 97। और अभी 122 से ऊपर का कुछ भी रहेगा हम उसको इग्नोर करेंगे। सो इट वाज सी 122 से बड़ा रहे। इन सारे केसेस में व्हाट वी डू इज वी वोंट कंसिडर दोज नंबर्स, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? इफ यू कैन जस्ट राइट इन चैट, दिस पार्ट इज क्लियर आई गेस। एस की वैल्यूज क्लियर है, और क्या कंसिडर करना है क्या नहीं कंसिडर करना है, अकॉर्डिंग टू दिस वी आर डन। ओके, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अप्रोच पर जाते हैं सीधा। तो हमें दिया गया है एक स्ट्रिंग, जैसा कि हमने देखा, व्हाट अ स्ट्रिंग इज बेसिकली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, उसमें सारा अंदर का तो कैरेक्टर्स ही है, सिंगल सिंगल वैल्यूज। सो सी, अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यूजिंग टू पॉइंटर्स व्हाट वी डू। हमें क्या पता है कि पैलिंड्रोम का मतलब फ्रंट से और बैक से स्पेल सेम करना चाहिए, राइट। तो हमने दो पॉइंटर सेट कर रखा से, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और इफ यू कंसिडर लेफ्ट और राइट तो हम लोग लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स से कि एल और आर ले ले फिलहाल। लेफ्ट ये है और राइट ये है। इनिशियलाइज कर दिया, और हम लोग ने डिक्लेयर भी कर दिया वैल्यूज एक्चुअली। ठीक है, अभी क्या है कि जब जब यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर रहता है, या जब जब यहाँ पे एक कैपिटल लेटर रहता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो वन वे व्हाट वी कैन डू इज, इफ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कुछ एस ऑफ आई। अभी देखो कैपिटल का क्या था, कैपिटल का था कि 65 to 90, अगर हमारा 65 to 90 के बीच कुछ एग्जिस्ट करता है तो हम उसमें +32 करके उसको, है ना, उसको कैपिटल बना देंगे, सॉरी स्मॉल बना देंगे। इफ एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन, व्हाट हैपन, greater than equal to 65, and s of I is less than equals to 90, what we can do is, rather यहाँ I के जगह हम लोग L और R रखेंगे। anyways we won't be considering this, we have a better approach। so अभी बस समझने के लिए हम बता रहे हैं कि जब जब ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा ना, so what we can do is s of L को हम लोग s of L +32 असाइन कर सकते हैं। so what it will do is it will convert this thing into lower case। okay, we have a better approach for this, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जिसमें, बट आई हैव टोल्ड यू क्योंकि ये बाकी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग। ओके, और फंक्शंस भी होता है, एसटीएल भी है, जो हम लोग टू लोअर केस या टू लोअर लिखते हैं सी प्लस प्लस में, सो इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली टू लोअर केस। नाउ सी, व्हाट वी कैन डू इज, हमने एल तो यहाँ लिख दिया कि इंट एल हमारा 0 है, आर जो है वो जो भी स्ट्रिंग का साइज है -1 रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक लूप चलाते हैं जहां एल आगे जाएगा और आर पीछे आएगा, और हम लोग हर बार मैच करते रहेंगे कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है या क्या, ये अगर वाई है तो ये भी वाई है क्या। और अगर कहीं डिफरेंस आता है कि यहाँ जेड है और यहाँ पे बी है, फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज नॉट अ पेलिंड्रोम, और हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, सो बेसिक आइडिया ये है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो ये पेलिंड्रोम नहीं होगा, और हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। अभी देखो ये पॉइंटर इधर जाएगा, लेफ्ट तो इधर जा रहा है और राइट इधर आ रहा है, बट इसके कंस्ट्रेंट तो होना चाहिए ना, कब तक जाएगा, वरना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लेफ्ट क्या होगा कि राइट को क्रॉस कर जाएगा। सो वी नीड टू हैव अ कंस्ट्रेंट। तो हमारा एक लूप तो चलेगा, बट हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कि हमारा जो लो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू आर होना चाहिए। ओके, अभी ये एक लूप चला। अभी हम लोग उसके अंदर में क्या करेंगे, एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस ही कर रहे होंगे, बट अगेन हम लोग को वो कंसिडर करना है कि नॉन अल्फा न्यूमरिक को हटाना है,
इसको कंसिडर नहीं करना, और जो भी लोअर अपर केस है उसको लो कर देना। ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे होंगे, यू सी, एक क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब तक ये लो वाला जो है वो अल्फा न्यूमरिक नहीं हो, तब तक तो हम लोग इसको आगे कर सकते हैं ना। लेट्स से यहाँ पे सेमी कोलोन है, कॉमा है, स्पेसेस है। तो जब तक एल हमारा ये सब भरा हुआ है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि वाइल एल इज लेस देन आर, तो ठीक है, दैट वी आर चेकिंग, we say there is a function to define this alpha num, and that function is called is alpha num. Let me once check, is alpha num is the function, although we will define our own function, but there is a function in C++, yeah, is al num. Okay, I'll just write it here, although we will define our own function. So एक function है is al num. अगर तुम इसे चेक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली तुमको बता देगा कि वो अल्फा नम है या नहीं। तो या तो तुम ये यूज कर सकते हो, या तो जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब तक ये रहे और नॉट इक्वल टू अल्फा नम करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे खुद से। अल्फा नम अभी हम लोग क्या डालेंगे अंदर में, एस ऑफ एल, राइट। मतलब कि जब जब हमारा एस एल अल्फा नम नहीं रहेगा, तब तक हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। ये तो एक कंडीशन, मतलब एक एक चीज हुआ कि हम लोग आगे बढ़ाते गए। अभी ये सेम चीज हम लोग राइट के लिए भी कर सकते हैं, while right is greater than left, although हमारा ये वाला लूप के अंदर ये वाला चीजें चलेंगी, तो हमें यहाँ वापस से स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एल प्लस प्लस तो इस लूप में हो रहा है ना। सो इट वोंट चेक दिस कंडीशन, इट विल हैव टू चेक दिस कंडीशन, सो वी आर स्पेसिफाइंग इट एंड वी राइट नॉट अल्फा नाउ। This lettering convention also you can see that is called camel case convention, I guess, as far as I remember। s of r या small r जो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि राइट को माइनस माइनस करेंगे। इज द सेम थिंग कि अगर हमारे पास वो सिंबल्स है, वो कुछ और सिंबल है जो कि अल्फा नम नहीं है, तो हम लोग उसको जब तक आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये दो चीज हो गया। और इफ अभी हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि दोनों कैपिटल है, ठीक है। तो दोनों कैपिटल रहेगा तो दोनों को यहाँ पे लोअर केस में लिख देंगे कि ये फंक्शन लिखेंगे अगर हम लोग टू लोअर एस ऑफ एल, तो ये क्या करेगा, अगर लो है तो सिक है, वेल एंड गुड, बट अगर लो नहीं है तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस। तो हम ये वाला चीज स्पेसिफाई कर रहे होंगे अपना, ये आपको जो लो करना है। और हम लोग क्या चेक करना है कि जो अंदर लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं, राइट। सो इफ इट इज इक्वल देन वेल एंड गुड, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट से इफ इट इज नॉट इक्वल to this, then we have a problem and then it is not a palindrome. So we directly return false, ठीक है, false, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि जब तक सिंबल नहीं रहेगा हम उसको आगे करेंगे, मतलब जब तक सिंबल रहेगा हम उसको आगे करेंगे या राइट को पीछे करेंगे, दोनों चीज वेरी सिंपल। एंड वी कन्वर्ट बोथ इनटू लोअर केसेस, इफ दे डोंट मैच वी रिटर्न फॉल्स। अभी देखो ये वाला जो लूप चल रहा है ये सारा तो उसके अंदर चल रहा है ना, तो हमें एल को बढ़ाते रहना होगा और आर को घटाते रहना होगा। क्यों, तभी तो हम लोग पैलिंड्रोम चेक करेंगे ना सारे के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, ओके। एंड if this criteria is never satisfied, if this criteria is never satisfied, we know for sure, we know for sure that the given string is our palindrome, okay. So if this is never satisfied, I'm looking at the chats, if you have any doubts you can write it in the chat, okay. So if this is never satisfied, we say that it is a palindrome and hence we return true। अभी देखो क्या होगा कि अगर उसको फॉल्स रिटर्न करना है ना,
तो वो यही रिटर्न करके फंक्शन को एग्जिट कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन एन एग्जिटिंग ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अगर ये एक बार ही रिटर्न कर दिया एक फंक्शन, तो वहीं पे एग्जिट कर देगा। अगर एग्जिट नहीं कर रहा है तो ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, अभी अल्फा नम को कैसे डिफाइन करना है वो लीड कोड पर ही देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट डिड वी से, यहाँ पे हमने बोला कि पहले हम लोग एल और ए डिफाइन करेंगे। एल इज इक्वल्स टू 0 और आर इज इक्वल्स टू जो भी हमारा स्ट्रिंग है एस, लेंथ भी ले सकते हो, साइज भी ले सकते हो, लेंथ -1, of course -1, why we you guys know, so while left is less than right। ये तो अंदर का लूप है और हम लोग बाहर में रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, तो वो भी लिख ही देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक सेटअप तैयार है। अभी अंदर में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो लेफ्ट में जो है, पहले तो लेफ्ट इज लेस देन दिस एंड नॉट अल्फा नम, जो कि हम लोग उसको डिफाइन करेंगे एस ऑफ एल। सो व्हाट वी डू एल प्लस प्लस and same condition for the right, while r is greater than, or you can write the same thing which we wrote above, replacing l with r and alpha none of r, then what we do, तब हम लोग r को पीछे लाएंगे। यहाँ तक सब चीज क्लियर है। हम लोग यहाँ से ये वाला, सॉरी आई डोंट हैव अ माउस, हम लोग ये वाला पार्ट सेटिस्फाई कर दिए इसको। अभी ये वाला बाकी है, अपर केस लोअर केस। तो हम क्या कर रहे हैं कि if टू लोअर s of l not equals to टू लोअर s of r, then we return false। अभी क्या कि हम लोग को लेफ्ट को तो आगे बढ़ाते रहना है और राइट को पीछे करते रहना है, तभी तो वो लूप चलेगा बाहर वाला, और एल्स वी रिटर्न ट्रू। ओके, इज एवरीथिंग फाइन? हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हम लोग एल बढ़ा रहे हैं, आर माइनस कर रहे हैं जब तक सिंबल्स है, और ये हो गया। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स मतलब सेटिस्फाई नहीं किया, तो द थिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। एट द एंड एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस ये तब तक चलेगा जब तक ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, लेट्स सी इफ इट रन्स। ओ ओ oh sorry, yeah, we didn't define alpha num. How do we define alpha num? Sorry, cool। तो अल्फा नम कैन ऑल्सो बी एन बूलियन, जब हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो अल्फा नम है या नहीं, कि मतलब अल्फा और नम के बीच एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो यहाँ पे ये है, और हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं। सो वी आर डिफाइनिंग इट एज कैर सी। अभी इसमें सीधा तुम रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, बट इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैरेक्टर ए एंड सी इज लेस देन इक्वल्स टू कैरेक्टर जेड, कैपिटल जेड रादर, ये एक कंडीशन है। इसको एक बक्से पे डालते हैं, ठीक है। सो फॉर क्लैरिटी हम इसको एक जगह पे रखते हैं। ये वाला तो हो गया हमारा अपर केस का सारा, और अभी लोअर केस का सारा लेते हैं कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉलर ए एंड सी इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड। कूल। अभी एक और केस बचा है हमारा डिजिट्स का, राइट। सो वी टेक अनदर केस, सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और सॉरी एंड सी इज लेस देन इक्वल्स टू 9, राइट। 9, वी क्लोज दिस ब्रैकेट। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना, ये सारा मतलब कि या तो ये हो रहा हो, या ये हो रहा हो, या ये हो रहा हो, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा अगर वो हमारा अल्फा न्यूमरिक है। तो अगर अल्फा न्यूमरिक नहीं है तो दिस विल इफ दिस रिटर्न्स, इफ दिस डजंट रिटर्न ट्रू, सो दिस कंडीशन नॉट ट्रू वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर ये फॉल्स भेजता है तो नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू।
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होके ये निकल लेगा. Okay, wait. We get a false here. I guess we are missing some condition. Greater than equals to a, less than equals to z, a to z और 0 to 9. सारा तो ले रखा है. L equals to 0, second minus 1. अगर हम यहाँ पे इक्वल टू भी रख देते हैं तो भी आई गेस दिक्कत नहीं होगा. yes equals to को चेक करते हैं. Okay, so we are running into one problem is here. ब्रैकेट अभी क्लोज हुआ है और ये एक एक्स्ट्रा कुछ ब्रैकेट है. टू लोअर प्लस n minus minus 1 0 down. ग्रेटर देन 0 लिया 9 लिया. फिर ये क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहा है. This hits this condition ki 2 lower s of L if 2 lower s of L is not equals to 2 lower s of R. One sec. चेक करते एक बार हम लोग 2 लोअर फंक्शन सही से लिखा है या नहीं. ओके सो 2 लोअर तो ऐसे ही होता है. कन्वर्ट 2 लोअर. if this happens एक बार हम लोग इसको डायरेक्टली इस वाले नंबर रख के रखते हैं जो हमारा. ओ वेट आई गॉट द एरर. यहाँ पे तो नॉट नहीं डाला है ना. ये नॉट होगा. अभी शायद चल जाएगा. So you'll have to look for some small errors that somewhere occurs in this code. बहुत सारा minus minus not what है. So हाँ वो यहाँ पे not नहीं था. That's why it was not working. If you submit it now, it will be submitted. Cool. Okay. So this is it. इसका क्या approaches है. या तो तुम ASCII याद रखो जो कि याद रखो because it's important. अभी हम लोग strings जब पढ़ेंगे और उसका कुछ कुछ questions आता है तो सारा वो सब use होता है. ठीक है. तो ASCII तो याद रहना ही होगा. खासकर अल्फा न्यूमेरिक्स का ASCII. ओके. सो ये तो सॉर्टेड है. वैलिड पैलिंड्रोम. अभी एक और क्वेश्चन है. बाय द वे दैट वैलिड पैलिंड्रोम वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन एन उबर इंटरव्यू आई सॉ समवेयर. हाँ तो ये पूछा गया है उबर के इंटरव्यू में. अभी ये जो क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन एन अमेजोन इंटरव्यू व्हिच इज दिस टू सम टू. ओके. तो whenever it is asked in an interview what you have to do is you'll have to explain him in this exact way कि हम brute force कैसे लगाते हैं. पहले उनको ये भी बताना है how do we put brute force, how do we then form optimized solution, what are the things you are thinking and how are you trying to proceed. So everything you have to say when you are talking of interviews and all. Oh, do some two. There is one difference between two sum and two sum two. Only difference is that यहाँ पे हमें एक sorted array दिया जाता है. ठीक है. यहाँ पे sorted array दिया जाता है. That is why we are able to exploit the usage of two pointers. Okay. तो से हम लोग एक sorted array को ऐसे define करते हैं कि ARR जो है वो एक array है. And for sorted, let's say I'll tell it like this कि as we go from left to right this is increasing. Okay. So it's a sorted array. Okay.
क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं यहाँ पे पूरा। वन थिंग यू नोट हियर, हमने जो पहले टू सम, नॉर्मल टू सम में जो हैश मैप वाला लगाया था ना, वो सेम अगर यहाँ यूज करेगा इट स्टिल वर्क्स, बट द थिंग इज this line here, that your solution must use only constant extra spaces and no extra space. If you use hash map, if I use hash map, it will use order of n extra space, so that is not what we need to do in our case here. Okay, so हम लोग hash map नहीं use करेंगे। and how do we get to it कि भैया ये टू सम का प्रॉब्लम है, that we are seeing। पहला एक हिंट तो होता है टू सम का कि ये टू पॉइंटर्स का कि the array is sorted। ठीक है, अभी sorted है तो क्या होगा उसमें हम लोग पॉइंटर्स को ना बहुत अच्छे से ये यूज कर पाएंगे। हाउ से हमारा ये जो एरे है 2 4 6 7 8 10 एंड 12 ऐसा कुछ है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमें हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक टारगेट स्पेसिफाइड है। लेट्स रीड द क्वेश्चन, गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे इज दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन हियर। ओके, दैट इज नॉट अ कंसर्न राइट नाउ, विल सी इट, बाद में जो भी आएगा उसमें +1 कर देंगे। Array of integer numbers that is already sorted in non-decreasing order, non-decreasing is increasing, find two numbers such that they add up to the specific target number, let these two numbers be number of this particular index, this particular index, and then you have to return index in the form of vectors, and of course this constraint says here कि index जो है वो वहां से वहां तक होगा। okay fine, अभी क्या है, we are given a target, in this case मान के चलो कि it's 6 and 8। okay, 6 8 sums up to 14, so our target is 14। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लेके चले गए इसको, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि एक बार तुम खुद से सोच के देखो, टू पॉइंटर्स हम लोग एक ये कर सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ रख देंगे, एक पॉइंट यहाँ रख देंगे। सिंस द एरे इज सॉर्टेड, तो हमें पता चलेगा कि जब भी 14 से बड़ा हो जाएगा ना नंबर, मान के चलो कि यहाँ पे अगर हमारा 12 ना होके कुछ 12 ना होके यार से कि ये कुछ 18 होता और ये हमारा खुद ही 14 होता। तो जब ये सॉर्टेड है ना, तो हम जब इसको बढ़ाएंगे, लेट्स से कि हम अभी ऐड किए 2 4 6 हुआ, 6 इज स्मॉल तो हम आगे बढ़ाए, 2 एंड 6 8, अगेन स्मॉलर देन 14 सो आगे बढ़ाते हैं, 2 7 9 अगेन स्मॉलर देन 14, फिर 2 8 10 अगेन स्मॉलर देन 14, बट 2 और 14 जब करा तो द सम इज 16। फाइन, तो अभी देखो हमें जब पता चल गया कि सम इससे बड़ा है, तो इसके आगे वाला तो ऑफकोर्स इससे बड़ा होगा। सो इन दिस वन वे वी आर एबल टू एक्सप्लॉइट टू सम। बट अभी दिक्कत क्या है इसमें, इस वे में चलने में कि अगर हम लोग जे यहाँ पे असाइन कर देंगे ना, तो लेट्स से आर सम इज 22, तो ये ना एंड चला जाएगा बट 22 कभी नहीं आएगा, मतलब हर टाइम 22 से छोटा ही होगा, तो फिर हमें आई बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा लग जाएगा। क्यों ज्यादा लगेगा हम बताते तेरे को, से वी आर इंक्रीजिंग जे, ओके दिस इज जे एंड दिस इज वी हैव फिक्स्ड आई, ओके वी आर इंक्रीजिंग जे जे जे, और अभी के लिए मान के चलो हमारा टारगेट 22 है, सो जे को इंक्रीज करा करा करा, 18 पे जब जे हमारा आता है, वी चेक सम 2 and 18 gives 20 which is again smaller than 22। now j doesn't have anywhere to go, so what we need to do is we need to increment I, और फिर हमें जे को पीछे लाना पड़ेगा। वाई, बिकॉज तुम 4 और 18 को देख के चले आप मैच कर जाएगा 22, बट अगर कुछ और रहेगा तो हम यू विल हैव टू लेट्स से if the given was 6 4 10, ओके, तब क्या करते कि हमें जे को वापस पीछे लाना पड़ता, और अगर यहाँ 8 नहीं रहता तो, नहीं तो फिर वहां बोलोगे कि 2 और 8 10 हो जाएगा। लेट्स से दिस इज 9 और हमारा एक टारगेट है 10, सो वी नीडेड 4 और 6 राइट। तो एक बार ही जे खत्म होता तो 4 लाने के लिए हमें आई को यहाँ पे लाना पड़ता, जे को वापस खींच के पीछे लाना पड़ता, तब हमारे एक आंसर यहाँ पे आता 4 और 6। दिस विल रिजल्ट इन वेरी वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी,
एक बेटर अप्रोच क्या हो सकता है ना कि हम लोग आई यहाँ फिक्स कर दे और जे को यहाँ पे फिक्स करें। इससे क्या होगा कि हमें पता है कि हमारा जो टारगेट है, वी नो दैट आवर टारगेट इज 14। ठीक है, हमने चेक करा 2 और 18 क्या है, 2 और 18 मेक्स 20 and our target should be low. अभी whenever we decrease j, we have a sum of lower element, lower value actually. ठीक है, whenever we are decreasing j, if we decrease j, the sum decreases, right? And if we increase I, the sum increases. क्यों? क्योंकि अगर ये 18 है, हम दो के जगह चार ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स दो से बड़ा आ जाएगा वैल्यू। मतलब ये दोनों को सम करने से बेटर ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा। सो based on this funda we will work. One quick question: do you help with mock interviews for embedded domain? I mean, look, these are the questions that do arrive in interviews only. So, and we go in much depth. So, yeah, you can join us for that also. Okay. And if you want to ask something more specific, then please elaborate it a bit. Then I'll be able to answer. Okay. Okay. Coming back to the topic. Based on this funda, we will be working. See how. अभी तो टारगेट 14 है, बट वी सी 218 मेक्स 20 विच इज ग्रेटर देन 14। सो हमें क्या करना है, सम को डिक्रीज करना है, एंड हेंस व्हाट वी विल डू इज वी विल डिक्रीमेंट जे। सो वेन एवर आर सम, what do I mean by sum is this, कि जो भी nums at I plus nums at j, this is what I mean by sum, is greater than the target, then what we have to do is we need to decrease j, okay, to get a smaller value. Up now what opposite we will do is when nums of I plus nums of j is less than the target, then what we do is we increment I, right? So this much is what we understand for sure. Okay, now one thing that we'll do is कि अगर इक्वल हो गया तो क्या, मतलब टारगेट और ये इक्वल हो गया तो क्या, तब तो आंसर मिल गया ना, कि अगर हमारा nums of I plus nums of j equals to target, and that's the answer. Cool. अभी देखो, so this is what basically we have to code. ये लीड कोड पे मीडियम क्यों है? Because whosoever will for the first time go and approach this particular algorithm of two pointers. So if you are doing it without knowledge, then you will need time to think something like this. Okay, and hence, and why? Because it has clearly mentioned that our solution must use only constant extra space. So we are using constant extra spaces because we are just declaring I, we are just declaring j, and we are declaring nothing else, right? Okay, if you will take sum equals to this, so एक sum आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, so एक constant space ही है वो। बट अगर हम लोग मैप्स यूज कर रहे होते तो ऑर्डर ऑफ n का स्पेस लेता है। ओके, कूल। अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो देख लिया ना, ब्रूट फोर्स रह गया था, सॉरी। इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी ऑब्वियस। ब्रूट फोर्स में क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ रख दो, एक पॉइंट यहाँ रख दो, जे को आगे करते रहो। वही जो मैं बोला कि अगर तुम टू पॉइंटर्स यहाँ यहाँ ले लोगे ना, तो दैट विल एक्चुअली रिजल्ट इन द ब्रूट फोर्स ओनली, जो कि तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाएगा। क्या होगा, आई को पहले इटरेट कराओ फॉर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर में तुम फॉर के अंदर जे को इटरेट कराओ, तुम एक सम को लिखो, और हर हर फॉर आई कॉमा जे पे तुम सम को लिखो आई प्लस जे, उसका वैल्यूज जो भी आता है उसका, से ये लिखो कुछ ऐसा, ऐसा कुछ लिखकर, और फिर
you will have to every time check if that is equals to target. अगर target की equals है, so you return I plus 1 and then j plus 1. That's it. Cool. So that is the brute force algorithm. It's quite simple. Takes the time complexity of order of n square. Okay. Moving on. How we need to code this? It's quite simple actually in coding. Two pointers are quite simple coding, but it's tough to think the logic behind it. Okay. So how can we code it? Let's get to the coding interface only and check. Okay. Yeah. Okay. Starting. How do we need to start? सबसे पहले तो we'll always be using this pointers. So of course उसको हम लोग को initialize करना है. लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, या आई ले लो, जे ले लो, कुछ भी ले लो. लेफ्ट इज जीरो एंड आर इज numbers dot size minus one. Okay. If you have any problem, then you can write in the chat box. I'll be there. अभी हम लोग को क्या करना है कि जब तक हमारा अगेन सेम थिंग, जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा हो. क्यों? क्योंकि ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, एक तो कि हम सम लिख देते हैं. नंबर्स ऑफ एल नंबर्स. ठीक है, हमने सम डिफाइन कर दिया. अभी क्या? स्विच, चेक योर लॉजिक. एग्जैक्टली जो लिखा है वही करना है. इफ वाला लूप के अंदर लगा दो कि सम जो है वो हमारा टारगेट से बड़ा हो. क्या करना है? यहाँ से सम टारगेट से बड़ा हो, इंक्रीमेंट आई. नो वेट, व्हाट एम आई सेइंग? सम टारगेट से बड़ा हो मतलब कि ये वाला कंडीशन ना, ये ये जो सम है वो टारगेट से बड़ा है. तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि सम को हम नीचे खींचे ताकि वो टारगेट के क्लोज है. राइट. बड़ा है तो उसको नीचे करना होगा, है ना. सो j minus minus, in this case it's r, so r minus minus. You write if sum is less than target. अभी क्या करना है? We need to l plus plus, else if लगा सकते हो. Else one condition left, greater than target, less than target. What's left? That's equal to the target. And then we just write return. Since it's a vector and we need to return as a vector form, either you declare the vector and return it, which I guess you shouldn't do because solution must use only constant extra spaces, although this doesn't uh, puts condition on the output of the answer solution. But yeah, you can directly write I plus 1, or rather in this case L plus 1 and R plus 1. Why plus 1? Because this is a one indexed array, clearly written there. Okay. So ये हो जाने के बाद अभी देखो एक प्रॉब्लम है. ये while जो वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो तुम while loop के अंदर रिटर्न कर रहे हो ना. So the function doesn't always know कि you are satisfying this condition, and hence it will ask you to write a default return statement. Default मतलब guaranteed return statement कि अंदर का कोई condition match नहीं होता. The function should know कि I still have a return statement which I'll return, or else it will give you an error. Okay, see, if you're not writing this and if you're running this, they should give an error. See, oh, this is some other error. I guess it should give an error. The return statements are not defined. Oh, yep, see, non-void function does not return a value in all control paths. What it is asking for you is a return statement, जो कि this function is sure कि भैया अब तो है मेरे पास कुछ return करने को. Cool, this works and do some works very well and is used in many problems. हम लोग merge sort में देखे थे. I'll show you. Okay, with the best time complexity.
कोड डालना रह गया है क्या? राइट, put some code, I'll have to put the code right. यहाँ पे डाल देता हूँ. How do we? Huh, is there no writing tool here? Is it? Okay, fine, let's not waste time. ये जो कोड है ये वैलिड पैलिंड्रोम का होगा. और यहाँ पे input to some. If you tell me, I'll discuss that merge wala algorithm once again because that is important. That is quite important to understand. Okay. And then we'll be closing today's class. The questions which I'll give today will be very important for you to solve because what we have seen today, I already have these questions in the notion, but what we have seen today is few examples, right? You'll have to do it on your own to understand it. Okay. So अभी two pointer पढ़े हो. The best approach is go go home नहीं. Actually, you are at home. So just revisit some of the questions that I'll give today. Try it on your own. If you can't solve it, check the solutions, but get to know that how we are doing. Okay. Even if you use ChatGPT, make use of ChatGPT. Like don't just copy and paste just to get that lead code streak wala thing. That's actually that's of no use क्योंकि सीखोगे ही नहीं तो फिर कोई पूछेगा तो बताओगे क्या? कोई पूछेगा मैं इंटरव्यूअर पूछेगा तो. So yeah, these are the things. If there are anything left that I can tell in two pointer. One is that merge wala algorithm because that's important. So we can discuss that. Okay, let's discuss that. Oh, merging arrays or vectors, anything you can say. Whenever I talk of arrays, which option did I turn on, which I don't know, is creating this problem? Cool. Merging arrays uses two pointers approach. Okay. So two pointers, the first thing that it also uses is the condition of it being sorted. Now it's not necessary. I'm not giving a condition कि two pointer तभी use कर सकते हो then when the array is sorted. No, two pointers can be used whenever you get an intuition to use two pointers, but it is generally used when the arrays is sorted. So that's a hint for you कि हाँ यहाँ पे two pointers लग सकता है. Whenever the array is sorted, there is a hint कि हाँ binary search भी लग सकता है. So these are the particular keywords that you will have to find and which I'll keep on repeating in this due course so that whenever you see तो तुम्हारा ऐसा कान खड़ा हो जाएगा कि like this is it. We can think of it, okay? Merging arrays, okay. So in merge sort, whenever we send two different arrays with a condition, okay, cool. With a condition that these two arrays are sorted, okay, I'll denote this as a non-decreasing array, that's sorted array. So this is array A, this is array B,
Let's take example 2, 4, 6, 8. Let's take 3, 5, 7, 9. Add 10. Cool. Okay. So how do we do this? इसमें what we are doing is we are not putting pointers in the same array. Rather, what we are doing is we put pointers one on each array. One pointer here and one pointer here. J. What did I turn on which I think can't just see here? Which option is it? Was it this? No. This is automatic shape wala option. Which one did I do? I don't remember. Why is it doing this? I don't want this. How do I close this? Oh. Anyways, does help sometimes and just creates problem the other time. Okay. What we are doing is इन दोनों को तो sort करना है. But we need an array of the size which handles these two arrays, right? So we create a resultant array, sir. Resultant array, rather merged array. Okay. Now अभी इसमें put भी करना है ना, so we will have one more pointer k here, जो which will just direct कि कहाँ पे डालना है भाई इसमें, ठीक है, which position that you have to insert the particular elements. Okay, so there are four here, five here, so there it will be 1 2 3 4 5 6 7 8. It's fine. These kind of things will be there. Now how do we proceed in this algorithm? I'll tell you that. Look, in this particular I here and in this particular j here, we will be comparing, okay, that which one is less. Okay, what we do is, yeah, what we do is we compare a of I with b of j, whichever is less. We insert into, if this array is r, so we insert into r of k. ठीक है, अरे यार, we insert into r of k. At the same time, what we can do is we can increment this k, right? Because we have used this, we have inserted, and now we want our k to be here, so we write k plus plus here only. What this does is puts insert the elements first and then increases the k pointer. Okay. We compare a of I and b of j, whichever is less, we put it here. Now there is one problem that will arise. Only that is what we need to handle. Okay. What is that problem? It is कि जब हम यहाँ पे 2 डाल दिए, ठीक है, फिर 3 के साथ कंपेयर किए, 2 डाले, 2 और 3 कंपेयर करके, so I write 2 here, and then what we do is whichever is less, we also increment that pointer. So since we have already inserted 2, so now our I needs to be here. Okay. Don't know which things are just. I needs to be here. Okay. Now we are doing the same approach. Okay. अभी I और J compare होगा, J तो हिला नहीं अपने जगह से, so now J is smaller, so what we do is we put 3 here, ठीक है, and then increment J. Now it compares 4 5, we put 4, then similarly I'll kill this, we put 4, and then similarly things carry on. See,
फोर डाला, फिर आई यहाँ पे है, कंपेयर किया, फाइव डाला, अभी जे यहाँ पे है, फिर कंपेयर किया, सिक्स डाला, ऐसे कर करके सेवन डालेंगे, फिर एट डालेंगे। अभी एट डालने के बाद क्या होगा, एट डालने के बाद क्या होगा कि I is here, and once we put 8, we are telling I to increment once again, and hence we are forcing I to point something around here. Okay, outside the array. तो अभी हमने 8 तो डाल दिया ना, बट हमारे पास अभी भी बाकी है ना, 9 10 तो डालना है। सो हियर अराइजेज अ कंडीशन कि अब हम इस वाले पर्टिकुलर गार्बेज वैल्यू के साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे ना इन दोनों को, ये तो गार्बेज वैल्यू देगा, सो वी कांट कंपेयर विद 9 एंड 10। Hence what we can do is either, there are again two ways, it's we either place plus infinity at end of both arrays, so what we'll do is कि मान लो हम यहाँ पे बोल दिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, अब करते रहो कंपेयर। प्लस इन्फिनिटी मतलब इन दिस केस इज इंट मैक्स, दैट इज वो इंटीजर के एक रेंज में जो मैक्सिमम होता है, दैट्स 2 टू द पावर 32 माइनस 1 आई गेस, वही होता है 2 टू द पावर 32 माइनस 1। ओह यार, 2 टू द 2 to the power 32 minus 1 is what int max is, you get it? Seriously? 2, 2, fine. 2 to the power 32 minus 1, we also have a plus infinity here। अब हम इसको बोल रहे हैं कि भाई अब इस नंबर से तू करते रह कंपेयर। अभी 9 तो ऑफकोर्स इससे छोटा है, 10 भी ऑफकोर्स इससे छोटा है, तो अब ये क्या करेगा, 9 और 10 को यहाँ पे एज इट इज डाल देगा। ठीक है, आई चेक व्हाट इट इज एंड क्लियर इट द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी देख यहाँ 9 और 10 तो डाल दिया, वन केस इज कि तुम प्लस इन्फिनिटी डाल दो। अभी सेकंड केस क्या है ना कि यू कंटिन्यूअसली चेक ऑन द साइज ऑफ एरे। ठीक है, दैट इफ आई एक्सीड्स दिस पर्टिकुलर साइज, देन जे का बाकी बच्चा सब डाल दो। One is you can check conditions. If you don't want to add any extra elements to your array, what you can do is check that I is less than a dot size, j is less than b dot size। अगर ये वाला पार्ट होता है तो j के सारे एलिमेंट्स को j को आगे बढ़ाओ और सारे एलिमेंट्स को put it inside k, and then just put it inside k, and if this condition happens, what you do is तुम I को फॉरवर्ड करो और just start putting it inside k। ठीक है, uh, did I just anyways, yeah, so this is it। okay, this is the algorithm। अगर हम लोग कभी कोड करके बता रहे होंगे मर्ज सॉर्ट तो हम आई विल टेल यू, बट इफ यू चेक आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला thing, I have told in it in very detail। ओके, यहाँ पे नहीं बताया था क्या, कहीं तो बताया था, so you can just visit the previous classes and check where I have told you that। okay, and that's it for today guys, these two questions, two pointer approach। वापस से एक बारी दिखा देता हूँ सारा, just to rewind, quick revision। I don't like this platform anyways, just using it for some reason। two pointers, ये वाला part, how do we define, ये बताया था, either this way or this way। और जहाँ पे भी टू पॉइंटर रखना है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का वो दिक्कत नहीं है हमारे पास। palindromes we read ASCII values, you need to memorize this। if you don't memorize, you just calculate, थोड़ा याद रखो, 65 plus 26, be very
26, right? Be very cautious कि 26 में we already include a, तो we add 25 to get 90, ठीक है? a already included, 26 ऐड कर दोगे 91 हो जाएगा. There is a catch there, okay? So that's it. Then we saw how to implement these two pointers. वो while loop का याद रखना because we don't have to cross it, okay? The same thing we implemented in two sum, that same again, that same while loop here, right? That we don't need to cross it. That can be equal actually. Left and right can coincide in the case of while, right? In the case of palindrome, क्यों coincide कर सकता है? M अगर अगर let's say this letter is M and this letter is also M, so अगर coincide भी कर गया तो M is equal to M. So you can just write this L is this here, कि L is less than equals to R, and that will work fine. ये हो गया, ये हो गया. लास्ट में हमने merge का देखा. So that's it for today, guys. I hope you liked our class today. आज का थोड़ा streaming quality भी better है. One thing I tell you that this is very interesting. If we read about ASCII values, open Notepad. Okay, do this thing. Open Notepad and just try sometime. Press your right Alt key. Let me check. I don't remember it's a right Alt key or left Alt key. Wait. Okay. Okay. Yeah. So you do one thing is you press left Alt key plus any number from your right numeric pad. Okay. Any number from right numpad. ठीक है. अभी ये क्या करता है ना, दिस टेल्स यू कि किसका वैल्यू क्या है. अगर तुम लेफ्ट ऑल्ट प्लस 65 डालोगे, so that will print a capital A. Now this is very interesting. Why? Because you'll get to see some very interesting uh, things. Wait, I'll tell you. देखो ऑल 236 डालोगे ना तो इन्फिनिटी आता है. ऑल 237 लिखोगे तो 5 आता है. ऑल्ट 1 पे ये सिंबल आता है. ऑल्ट 2 पे ये सिंबल आता है. ऑल्ट 3 पे ये सिंबल आता है. एंड दीज आर एक्चुअली द ASCII values of this particular symbol only. See, I'll write all 65 and I get capital A. If I write alt 122, I get small z. Okay, so this is it. And this is quite interesting. If you remember, if you forget alt, yeah, if you forget ASCII, you can check it like that. So that's it. Okay, cool then. Okay then. See you. Bye bye. Do the questions. Okay. Cool. Bye bye. We are ending the stream for today. Thank you all.